which I really wanted to know, and which a lot of our users have asked us, is that how do you reverse diabetes? Uh, right. I have reversed approximately 100 plus cases, and they do not need any medication for controlling blood glucose. And to reverse diabetes, we need to really understand the exact causes and then stop doing that. Likewise, we need to give up something while starting to adapt for something different. Uh, like, I usually recommend to stop consuming dairy products. Why people are resistant to this idea? लोग मेरे से बोलते हैं अभी कृष्ण के जमाने में भी दूध पिया जाता था. बिल्कुल. But the molecules of protein in the milk is similar to the molecules of protein in the pancreas, which produces insulin. And since the molecules of protein in milk is a foreign thing for our body, our immunity system or immune system gets activated and destroy those molecules. Right. Break up those molecules. And in that process, they break up the molecules of pancreas also. Molecules of protein in the pancreas also. And this is, I think, very interesting for all of our users, that milk also creates some issues. So you must understand this from Dr. Trehan. I think this is really going to help you a lot. Yeah. And also, I usually recommend oil-free cooking. And people are also resistant to that because of the habit or because they don't know how to do oil-free cooking. Now, to address the issue, कि कृष्ण के जमाने में भी दूध पीते थे, वो तो मक्खन चोरी करके खाते थे. आपने भी सुना होगा शिवानी जी. बिल्कुल. अगर कृष्ण के जमाने में वो एक he was a cow herd, right? And उसके पास तो दूध की कमी नहीं थी, उसके पास मक्खन की भी कमी नहीं थी, बहुत सारी गायें थी उनके पास, तो उनको चोरी क्यों करनी पड़ती थी? उनको चोरी इसलिए करनी पड़ती थी क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग के कंजम्पशन के लिए नहीं थी. राइट. जब किसी चीज का अभाव होता है तभी कोई चोरी करता है. तो ये लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं उसका हमें जो बेनिफिट मिलना है वो एज ए मेडिसिन हम उसका बेनिफिट लें, ना कि एज ए फूड लेने की कोशिश करें. ओके. And another thing is, many people say that milk contains calcium. And you being dietitian, you must be knowing कि calcium किस में ज्यादा होता है. Right. If you take 100 gram of milk, and that contains only approximately 123 milligram of calcium. Calcium, right. Approximately that, right? And if you consume sesame seed, 100 gram, you will get 170 milligram of calcium. Right, absolutely. Moreover, how much protein do we need? A child, while growing, needs mother's milk. Mother's milk contains 33 milligram of protein, while the cow milk contains 23 milligram. But you know, जैसे ही थोड़ा सा बच्चा बड़ा होता है तो मदर का लैक्टेशन बंद हो जाता है. Why? Because अब उसका वो रिक्वायरमेंट पूरा हो गया. राइट. राइट. कैल्शियम और प्रोटीन हमारे को जितना चाहिए वो हमारे को नेचर देता है. तो ये मिथ है कि भाई दूध पीने से ताकत आती है या दूध से हमें कैल्शियम मिलता है, ये एक मिथ. And anyways, Dr. Rajat, the kind of milk we get these days, it's really not the pure one. In any case, आज के डेट में जो भी दूध मिल रहा है, अगर हम लोग ये कहें भी कि दूध पीना है, या लोग बहुत सारे लोगों को होता है कि नहीं दूध तो पीना ही है, तो इन दैट केस ऑल्सो जो भी आजकल काउज से मिल्क मिल रहा है वो किसी ना किसी तरह से केमिकलाइज्ड, या फिर उसमें आपके एंटीबायोटिक्स हैं, या फिर उसमें हार्मोन्स हैं. तो इन एनी केस दैट इज नॉट गुड फॉर एनीबडी. एग्जैक्टली. ऑक्सीटॉक्सिन एक हार्मोन इंजेक्ट किया जाता है. राइट. तो वो हार्मोन्स आते हैं. एंड इवन दे extract twice a day milk by the milkman or dairy person, and that creates the tissue damage of cow's udder. Absolutely. Right? And that
it doesn't heal and it produces pus also. So milk contains pus cells also Right. nowadays. So it is better to avoid dairy products. Right. If you Okay. are a diabetic, if you are healthy, you can keep consuming dairy products. While I am not personally, I am not taking any dairy products.